स्पोकन इंग्लिश के सिलसिले में ये एक कोर्स है जो कि रेपिडेक्स के नाम से मार्केट में भी है, इंटरनेट पे भी है। तो पहले मैंने इसकी 2 वीडियो बनाई हैं, या 3 बनाई हैं, मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल में ये तीसरी है शायद, तो देखेंगे। चौथी है शायद, चौथी है मेरे ख्याल में। चलिए जितनी भी हुई, तो आप इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं। अब जो है ये इसका 21वें दिन का जो है ये कोर्स का 21वें, क्योंकि ये 60 दिन का कोर्स है, तो ये 21वें दिन हमने क्या कुछ करना है, इसमें मैं जितनी ज़्यादा हो सकता है मैं उनको कवर करूँगा। अपना तारुफ करा दूँ, मेरा नाम अब्दुल रहीद है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, बल्कि इंग्लिश का टीचर हूँ। मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर हैं। दे आर नॉट, ये रवायती जो हैं मेरी जो एक्सेस है, वट आई शुड से, मेरी जो क्या कहते हैं स्किल्स हैं वो रवायती नहीं है, वो रिवोल्यूशनरी हैं। ठीक है, दे आर नॉट कन्वेंशनल। क्योंकि जो हमारा स्कूलों में मेथड चलता है उसमें ये होता है, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और मिनिमम प्रैक्टिस की जो है वो की जाती है या करवाई जाती है। इसके अलावा ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी किया जाता है। ग्रामर जो है इनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रवायती तौर पे चली आ रही हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, हमारे में अपने आइडियाज़ जो हैं वो चेंज करने होंगे। पहली बात ये है कि एक आम तासर पूरी दुनिया में ये पाया जाता है इंग्लिश सीखने वालों को, एक जो पहले ही मिसकंसेप्ट या रॉन्ग आइडिया जो दिया जाता है वो ये है कि आप ग्रामर सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। हालांकि सारी दुनिया जानती है प्रैक्टिकली, जिन लोगों ने वो इंग्लिश जो बोलते हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इंग्लिश बोलते वक्त वो ग्रामर के टर्मों, ग्रामर के नाम और ये वो इनका बिल्कुल कभी कुछ आइडियाज नहीं रखते। ठीक है, कुछ बहुत मामूली सी चीज़ें जो ग्रामर और टेंसेस से रिलेटेड हैं वो हम ध्यान में रखते हैं। अदरवाइज बहुत सी जो यहाँ पे मामलात में बताई जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, यूँ समझें कि ऑलमोस्ट 100% हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और ग्रामर बताते खुद कोई लैंग्वेज नहीं होती। ग्रामर इज़ नॉट अ लैंग्वेज। ग्रामर आपकी लैंग्वेज को बेहतर करती है। मिसाल के तौर पर अगर ऑलरेडी इंग्लिश लिखते पढ़ते बोलते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, और अगर हमें ज़ाहिर है हमें 9 बजे की खबरें तो नहीं पढ़ने देंगे वो टीवी पे, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड है। हालांकि वो भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन उसके लिए वो तलफ़्फ़ुज़ और पता नहीं क्या क्या और बहुत सी छोटी छोटी पेचीदगियाँ जो होती हैं उन सब को जो है वो मलहूज़ रखना होता है। एक और मिसाल मैं यूँ लूँगा, ये नहीं, अगर आपने पक्का सिंगर बनना है तो फिर आपको जो है बचपन ही से किसी माहिर सिंगर जिसने ये सारे चिल्ले काटे हों उसके हवाले कर दिया जाए, तो तब आप जाके पक्के सिंगर बनते हैं। अदरवाइज आपकी खुशी और गम में जो भी आवाज़ें निकलती हैं वो सारी सिंगिंग में ही आती हैं, और उसको तो कोई दबा नहीं सकता। इसी तरह से चूंकि हमारा बेसिक जो है इंग्लिश सीखने का मकसद कम्युनिकेशन होता है, हम किसी की बात को समझ सकें, किसी को अपनी बात समझा सकें, ये इंग्लिश का जो है ये बुनियादी पर्पज़ है। इसमें इंतहाई महारत की कोई ज़रूरत नहीं। एक और मिसाल देता हूँ, समुद्र में तैरने के लिए हमें कहीं भी स्विमिंग के लिए हमें 5 से 6 फुट गहरा पानी की ज़रूरत होती है। 6 फुट भी नहीं, 5 फुट गहरे पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो आप अपना सर जो है वो पानी से बाहर रख सकते हैं, और अगर आपकी हाइट 5 फुट है तो 4 फुट पानी की जो है वो ज़रूरत है, इसमें आप जो है वो तैर सकते हैं। अब आप लोग जो हैं वो तैरने वाले तो गोताखोरी भी करते हैं, वो समुद्र के बहुत गहराई में भी जाते हैं, हालांकि दैट इज डेंजरस टू एज वेल। वहाँ पे आपको इंतहाई गहराई में गोता लगाने से आपकी जान भी जा सकती है, और हो सकता है इंतहाई गहराई में तक गोता आप लगा भी ना सकें, क्योंकि नीचे पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसमें एक कंपटीशन ले लें, जो सबसे नीचे तरीन गोता लगा के आएगा हम उसी को स्विमर मांगेंगे मानेंगे, तो ये भाई ये भी ठीक नहीं है। आप 10 फुट से ज़्यादा स्विमिंग कर लें, ठीक है, चलें 20 फुट लगा लें, 10 से 15 फुट की आप स्विमिंग कर लें तो आप स्विमर हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप डूबना हुआ तो पहले ही 10-15 फुट की स्विमिंग में ही डूब जाते हैं।
तो 4 फुट से गहरे पानी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर स्विमिंग सीखनी है। इसी तरह से हमें ग्रामर में भी अगर हमने इसको सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, तो थोड़ी सी बातें हैं, हमें 2 फुट 2 फुट भी नहीं, 1 फुट पानी में रहने की ज़रूरत है और हम जो है अच्छे तरीके से हम स्पोकन की तरफ आ सकते हैं। तो हमें ये बताना, जैसे यहाँ पे बहुत से प्रोनाउंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, कोरिलेटिव हैं, एक्टिव है, पैसिव वॉइस हैं, और ये क्या टेम्पोरल्स हैं, मुझे इनका अभी तक नहीं पता, काउंटेबल्स हैं, नाउन्स हैं, एम्फेसिस हैं, एंड पता नहीं क्या, ये सब इम्प्रेस करने के लिए है, ताकि आप इम्प्रेस हो जाएं। अच्छा, तो इसमें ये ब्राउन वाले तो मैंने, ये जो ग्रे वाले हैं ये तो नहीं पढ़ूंगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ूँ। ठीक है, आप भी ना ओवरलुक करते हैं। अब ये बुक है, हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लिखने वालों ने जो लिखा है वो वैसे फजूल में नहीं लिखा, वो रिसर्चर्स जो हैं ये उनके लिए है। आम बंदों ने जो इंग्लिश लिखनी पढ़नी बोलनी है उनके लिए ये नहीं है। कुछ लोग होते हैं बहुत गहराई में, जैसे मैंने बताया कि पानी में गोताखोरी में इंतहाई गहराई में जाकर जो है वो वापस जिंदा सलामत वापस आ जाएंगे, ये उनके लिए, ये हमारे लिए नहीं है जिन्होंने 4 फुट में तैरना है। ठीक है, और हमें इसी जो है इतना ज़्यादा तो अंग्रेज भी नहीं करते भाई, जितना जो है हमें वो डाल देते हैं, ये मुसीबत में डाल दिया जाता है। अब हमारे हाथ पास ये देखें, पहले भी 2 वीडियो में मैंने बनाई है, अच्छा 3 बनाई है, तो उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी। तो ये देखें इसमें, दिस इज हामिद। अच्छा, ये ही का आप ये सारे अल्फाज आपको आइडिया होगा, नहीं है तो आप गूगल कर लें, ही, शी, इट, दिस, दैट, किसी भी बंदे से पूछ लें, आपको ये बता देगा। कोई भी स्कूल जाने वाला बच्चा आपको इनकी ट्रांसलेशन बता देता है, और यहाँ पे भी इनकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, आप यहाँ से भी बात को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी शायद ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हों। अच्छा जी, अब दिस जो है ये प्रेजेंट की निशानी है। अच्छा, प्रेजेंट में जो है, प्रेजेंट की बेसिक ये जो है ये प्रेजेंट को, वो कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो हम प्रेजेंट में ही आती हैं, लेकिन प्रेजेंट की निशानियाँ जो है वो 6 हैं। ठीक है, उर्दू में अगर आप देखें तो उर्दू की निशानी, हर सेंटेंस आखिर में है, 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 हो, ये भी प्रेजेंट, हूँ भी प्रेजेंट है, एक और भी है भी होगा कहीं। तो 4 निशानियां हैं, हूँ, हो। जब आप फिक्र के आखिर में ये आ गए तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से अंग्रेजी में इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, ठीक है, ये प्रेजेंट है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है भाई, हैज हैव आ जाए तो भी प्रेजेंट है, आगे शायद कहीं आ जाए, हैज हैव भी प्रेजेंट होता है, इज, एम, आर, हैज, और सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म आ जाए तो भी प्रेजेंट होता है। और इसके प्रेजेंट की निशानी क्या, ये देखें, हैव आया हुआ, ये प्रेजेंट है, कहीं देखा था, ये हैव प्रेजेंट है, तो हैज हैव भी प्रेजेंट होता है। कैन अगर आ जाता है तो वो भी present। ठीक है, तो अब हम जो है इसको इस तरह से देंगे, हमने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है तो हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, इसको आप ना पढ़ें। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता, उर्दू में लिखा हुआ है, दिस इज हामिद एंड दैट इज अंजम, दिस इज हिज बुक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आसानी महसूस करें ये पढ़ लें, यहाँ आसानी महसूस करें ये पढ़ लें, तो चूंकि मैं, मुझे इंग्लिश आती है तो मैं, हमें पाकिस्तान में तो ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक पास होते हैं जिन्होंने इंग्लिश सीख लेती है। जो मैट्रिक जिन्होंने पास नहीं किया होता वो तो अंग्रेजी के बेसिक ग्रिप नहीं आते, वो कहते हैं हमने बोल के क्या करना है, वो कोई हुनर वगैरह वो सीख लेते हैं, कोई स्किल सीख लेते हैं, तो वो उसी से वही उनकी नजरी आमदनी होती है, उनको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो अमीर हो जाते हैं तो किसी अंग्रेजी बोलने वाले को साथ रख लेते हैं, तन सैलरी पे आसानी से मिल जाते हैं। एनीवे, तो ये जो है ये इंग्लिश है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। आप अगर नहीं आ रहे तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, एच ए एम आई डी है मोहामिद, आपने की है किसी से भी अड़ोस पड़ोस में, या कोई भी आपका जानने वाला है उसे कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल दो, तो वो इतना काम तो आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो मैं इनको पढ़ रहा हूँ, दिस इज हामिद। आप ये वीडियो बार बार सुनेंगे तो भी आपको जो है अ, इससे मदद मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि अल्फाज किस तरह से बनते हैं और वगैरह वगैरह। चलें, अब हम शुरू करते हैं। हमने मुझे पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। अब तो इंग्लिश मीडियम है, बच्चे शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं। शुरू करते हैं, ठीक है।
तो दिस इज हामिद। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी। दिस इज हामिद, दैट इज अंजुम, दिस इज हिज बुक, दैट इज हर डायरी, he is a boy, she is a girl, you are a student, I am a clerk, this is a pen, this is an apple, that is an orange, I am an Indian, Indian तो नहीं है भैया, पाकिस्तानी है, ठीक है। I am an I am a Pakistani, this is the camera, और this is the need, दी का इस्तेमाल के बारे में है। आगे है I have also bought the same pen, I have also bought the same pen, this is a pencil and it is mine। पहली दफा दिस होगा, दूसरी दफा दिस नहीं कहेंगे, अब वो इट हो जाता है, ठीक है। शुरू में दिस होता है, उसमें बाद इट हो जाता है। इसी तरह से पहली दफा किसी चीज का जिक्र करें तो हो सकता है ए एन हो, लेकिन वही चीज दोबारा जो है वो दी हो जाती है। पर ए पहले एक दफा ए पेंसिल, जब ये दोबारा यही पेंसिल की बात होगी तो फिर दी पेंसिल हो जाएगी। दैट इज माई गोट, these are my books, and those are your books. These books are mine, those books are yours. These are your notebooks, and they are on the table, and those are my marbles, and they are of different colors. India is our country. We are Pakistan is our country, and we are her inhabitants. Country के लिए हर लगा लेते हैं, ठीक है। Mr. Sharma is your teacher. Kamala and Vimla are sisters, and their mother is a teacher. Each of these boys ज़्यादा है, ये प्लेस गलत है, प्ले आएगा। ज़्यादा हो तो एस पहली फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते, साथ ही उसके यानी बॉयज के फौरन बाद अगर पहली फॉर्म आती है तो हम पे एस नहीं लगाते हैं, अगर ज़्यादा लड़के एक हो तो ठीक है। ईच ऑफ दिस बॉयज, हाँ ये चूंकि लड़कों में से हर एक है इसलिए ठीक है भैया, ये ईच के साथ प्लेज है, ठीक है। ईच ऑफ दिस बॉयज प्लेज गेम्स, none of us went there, we enjoyed ourselves during the holidays, whoever is the best, whoever is the best will get the prize, sorry, whoever is the best will get a prize, she is wiser than me, my handwriting is better than that of your brother. My handwriting is better than that of my brother. What is that? That is the computer. What are those? Those are books. And this is a box. And these are its corners. Who is that? He is my friend. Whose notebook is this? It is hers. This cow is ours. Those shops are theirs. This watch is mine. और उसके बाद हैं जी दिस हाउस। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं समझ आते यहाँ से देख लें, ठीक है, लेकिन इनको पढ़ें, ऊंची आवाज में पढ़ें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। खामोश रीडिंग ना करें, इसकी इंग्लिश की खामोश रीडिंग ना करें। अगर आप इंग्लिश सीखने हैं कभी भी इंग्लिश की खामोश रीडिंग ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके लिप्स जो हैं उनको एक उनकी ट्रेनिंग होगी इंग्लिश के मुख्तलिफ अल्फाज को पढ़ने की, ठीक है। तो अगर आप उर्दू के साथ साथ पढ़ेंगे फिर उर्दू वाला सेंटेंस आपको याद रह जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको बड़ा ही आपको ज़हन में दबाव पड़े कि हाँ जी इसका क्या मतलब है, तो एक नज़र इसको देख लें, आपको आसानी, लेकिन पढ़ें आप सिर्फ इसको, ठीक है। तो अगर आप इसको ना भी देखें तो भी आपको ऐसा ऐसा समझ आ ही जाएगी कि इनकी क्या मीनिंग है। बिल्कुल ट्रांसलेशन वाला मेथड छोड़ दें, उससे अदरवाइज आपकी इंग्लिश सीखने की रफ्तार बहुत कम रहेगी। अगर शुरू में नहीं समझ आती कोई बात नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस आपको आसानी से समझ आने चाहिए, आप बार बार पढ़ेंगे खुद ब खुद आपको पता चलेगा इनके मीनिंग क्या। दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज हिज, योर पेंटिंग इज द बेस्ट, I am listening to your I am listening to you attentively. Who is knocking at the door? Whose language is this? That is a different method altogether.
She doesn't know the value of time. You can trust them. I am very thankful to you. His rude behavior shocked me. I never expected this from you. These books are of no use to me. We have to leave at once. They have their own houses in Delhi. That shop belongs to my uncle. तो यही जो है आप इसी तरह से जैसे मैंने पढ़ा है तो एक दिन का भाई ये लेसन खत्म हो गया ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ये उसी में भी वही आएंगी बहुत सी चीजें वैसी आएंगी जिनकी हमें जरूरत नहीं है अब ये डे 22 का जो है वो आता है the book is on the table इसमें ऑन प्रपोजिशन की ज्यादा ये क्या ऑन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो चीज़ों के दरमियान जो हैं वो एक राब्ता जो है वो बनाते हैं हमारे यहाँ पार में से इस तरह के अल्फाज हैं उनकी प्रैक्टिस है The book is on the table, the computer is on the table, the clerk is at the seat, not at the seat, in the seat होता है The clerk is in the seat. अगर तो सीट के बाजू नहीं है भाई ठीक है तो फिर तो ऑन होगा ठीक है अगर सीट के बाजू है तो फिर इन होगा एट तो नहीं हो सकता एट तो उस एट द टेबल हो सकता है एट द सीट नहीं हो सकता ऑन द सीट है देयर इज अ ग्रीन पेंट ऑन द डोर फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर ये ठीक है आई विल सी यू एट होम ये भी ठीक है नेहा इज कमिंग इनटू द रूम Sharma and Kamal both are in the room. I'll pour some more water into the glass. People bathe in the river. We sit on the bench, but father sits in the armchair. We sit on the bench, but father sits in the armchair. Why don't you sit at the table? अच्छा सवालिया जो फिक्र होते हैं उनमें क्या क्यों कैसे वगैरह की इंग्लिश पहले होती है ठीक है क्या क्यों कैसे कब इनकी इंग्लिश पहले होती है So why don't you sit at the table, feed the floppy into the computer? Floppy वाला ज़माना गया भाई. We went into his house. The letter was sent by courier. Sorry, the letter was sent by courier. Please translate this from Urdu into English. यही काम आपने नहीं करना भाई. उर्दू से इंग्लिश ठीक है बेहतर है लेकिन इंग्लिश से उर्दू तो बिल्कुल ना करें Himachal Pradesh is in northern India. Nepal is to the north of India. Don't judge a person by his clothes. अगर आपने इसको बेहतर तरीके से समझना आप इसको पहले सारे को उर्दू पढ़ लें और उसके बाद आप इसकी इंग्लिश पढ़ लें ठीक है या फिर आप पहले उर्दू पढ़ के फिर उसकी इंग्लिश कर लें इंग्लिश से उर्दू हर किस ने करें इसको ट्रांसलेशन में तो फिर दोनों ही आपको लाउड पढ़ने पड़ेंगे तो मैं ये चाहता हूँ ये लाउड पढ़ें इसको देख लें इसको ना पढ़ें ठीक है बल्कि मैं तो कहूँगा देखें भी ना इसको वैसे ही गेस करने की कोशिश करें क्या मीनिंग हो सकती है ठीक है किसी से हेल्प लें पूछें किसी से क्या मतलब है इसका क्या मतलब है फिर आपको याद रहेगा ठीक है I filled the bottle with milk. The tiger was killed by the hunter. He stood beside his brother. I kept a football beside hockey stick. Divide the sweets between Sharif and Mahmud. Shimla is situated amongst the mountains. He is a man of principles. There is a bridge over the Yamuna River and throw the ball over the wall. और क्या भाई Birds are flying over the bridge. Boats are under the bridge. Anis is standing between Raja and Danish. Rakib, I don't know, Rakib is in front of Rafiq. Rafika is standing behind him. We are in confusion. The money is in my pocket. Fishes are in the sea. Who is inside?
नहीं जी, ये दिन भी जो है इसका मुकम्मल हो गया। आपने इतनी ही इंग्लिश पढ़नी है, ज़्यादा जो है गहराइयों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन आई से आप सिर्फ इस तरह से इंग्लिश पढ़ें, सुनें, पढ़ें, ठीक है? और मीनिंग का आपको ज़रूरत पड़े तो उर्दू में लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें। तो पहले आप जो है इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें। मैंने आपको पढ़ दी है, अल्फाज भी सामने लिखे हुए हैं, आपको आइडिया तो हो ही गया है कैसे पढ़ते हैं। ले जी 23rd आ गया। एज सुन एज वी रीच, इसमें भी ये सब कुछ ये इसको नजरअंदाज करें, ये भी छोड़ दें, ठीक है? इससे भी हमें कुछ ज्यादा मिलने वाले रुकावटें ही मिलेंगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? As soon as we reached the station, the train left. No sooner did he get up to deliver his speech than the hall began to resound with cheers. बहुत लंबा सेंटेंस है। We had scarcely reached the school when the bell rang. He had hardly left his house when it started raining. Unless you run fast, you will not be able to catch the train. Please wait for me until I return. As long as I'm here, you needn't worry about anything. Although he's poor, yet he is honest. As far as I remember, he was here yesterday. Get the roof repaired before it should leak. What to speak of standing first? What to speak of standing first? He cannot even pass the examination. He would rather fail than copy. No less a person than the Chief Minister of the state hoisted the national flag. He is so ill that he cannot rise from his bed. He works hard so that he may win a prize. The higher you go, the colder it is. Either you or your brother is guilty. She is too weak to walk. She is so weak that she cannot walk. I study not only English but French also. Neither Babu nor his brother plays in this park. Neither Babu nor his brother plays in this park. इधर इधर एक ही चीज की तरफ होते हैं, इसलिए यहाँ पे पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, SCS लगा लेते हैं। It is July 2003. He will come in August. You will receive this letter. You will receive his letter in 3 days. You will receive his letter within 3 days. We left for Mumbai on 20th February. You came at 3:30. और जिसके बाद हैं और भी sentences हैं, ये लिखे हैं। The shop remains open from 9:30 a.m. until 7 p.m. She was here till 5 p.m. yesterday. The boys play every day for 1 hour. He has been staying here since yesterday. She has been living here since 2000. How long have you been learning English? I have already written to her. I have already written to him. She hasn't come yet. The show is about to start. I shall finish my work next Friday. He'll finish his work in about 4 hours. I reached there around 3 o'clock. When Rani came, Mala left. He was breathing his last by dawn. I'll meet him next month. चलें जी, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें इसको। अब 24वां दिन है 24, इसमें भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाले अल्फाज हैं, इनकी प्रैक्टिस होगी। और ये क्या है, का, में, से, को, इस तरह के अल्फाज हैं। From, okay? The boy was absent from school. You must abstain from smoking, or you must refrain from smoking. My uncle has come from Assam. He prevents me from going there.
He stops me from going there. His company is progressing by leaps and bounds. I was occupied by my father. Sorry, I was accompanied by my father. Please don't get disturbed by this news. He was highly amused by my story. This packet should reach Mumbai by Monday. You don't know how to deal with others. We should be acquainted with the English language. He was gifted with the talent of painting. We got fed up with his behavior. My boss was pleased with me. He was absorbed, he was absorbed in his work. He was busy in his work. Shala is deaf in one ear. You must be polite in your behavior. He is well versed in music. He was sure of success. He is fully aware of his weakness. He is fond of mangoes. He reminds me of his brother. It is a matter of great honor for me. Is she preparing for the test? Is she studying for the test? I always care for him. He apologized to me for his misbehavior. He'll have to account for the money. कहीं आपको मीनिंग की तलाश समझने की ज़रूरत हो, आप वीडियो को स्पेस बार प्रेस करके रोक सकते हैं और फिर मीनिंग देख के उसके बाद स्पेस बार से ही उसको दोबारा प्रेस करें तो वीडियो आपकी कंटिन्यू हो जाती है। या माउस से आप क्लिक करें वीडियो पे तो रुक जाएगी, फिर क्लिक करेंगे तो चल पड़ेगी। आगे चलें जी। He is addicted to smoking. He acted contrary to the rules. Some people prefer wealth to health. He referred the matter to the higher authorities. The police inquired into the matter. The police looked into the matter. We put our books into our bags. He went into the room. I always warned you against your enemies. The doctor warned him against working too hard. His criticism is not based on facts. Why are you bent on going there? We cannot rely on him. Over. Snow is scattered over the road. Ice is scattered over the road. The bridge is over the river. The mother is worried about her son's health. She was inquiring about Seema. I was about to go. He succeeded by dint of hard work, and we should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. We should act in favor of our friends. We must work in order to live. I attended the office in spite of my illness. We are in the midst of trouble. We had to leave suddenly in the midst of meeting. Pankaj had to give up studies for want of money. आगे है जी 25वां दिन आ गया। एक्टिव पैसिव वॉइस से है। ये जो है सॉन्ग इज सung बाय हिम और ही सिंग्स अ सॉन्ग। अच्छा यहाँ पे जो है ज़्यादातर अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस पॉसिबल है, यानी एक्टिव वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद होता है और पैसिव वॉइस ऐसे होते हैं जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता। अब स्कूलों में एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि एक्टिव को पैसिव करें। इसकी तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बैन कर देना चाहिए। इसकी हरगिज़ इसका ना कोई फ़ायदा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास काम करने वाला होता नहीं, उसका पता नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो बनते ही पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं। मतलब ये है या तो काम करने वाले का पता होता है या काम करने वाले का पता नहीं होता।
जो कोई भी चीज, जो कोई काम कर, बंदा हो, चीज हो, एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो, जो कोई काम कर सकता है, एबिलिटी टू मूव, काम करने से मुराद हरकत कर सकता है या हरकत दे सकता है, तो हम उस, अगर वो हम उसका पता है तो वो पहले उसका जिक्र किया जाएगा, उससे सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर हमें किसी चीज का पता ही नहीं है, कोई ऐसी चीजें जो कोई काम नहीं कर सकती हैं, जब उनसे स्टार्ट करेंगे तो फिर सेंटेंस हमारा पैसिव बनेगा, फिर इस वाली कैटेगरी में हम आ जाएंगे। इसको इसमें चेंज करने की कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, और ये इंस्पेक्टर को छोड़ दें। अब हम जो हैं दो तरह से इसको स्टडी करेंगे। पहले तो ये है ये वाले सेंटेंस, ये थोड़े बाद में इसको स्टडी करें, पहले ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। आई डिलीवर्ड द मैसेज, दे विल प्ले क्रिकेट। आर यू राइटिंग a letter? Laborers are digging a canal. Laborers are digging a canal. Have you finished this job? Will you have packed your luggage before the train's arrival? Will you have packed your luggage before the train's arrival? Help him. Okay. अब ये सारे ध्यान में काम करने वाला नहीं था। अब मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, बाय से पहले पहले इसको खत्म कर दूंगा। A song is sung. The message was delivered. Cricket will be played. Is a letter being written? A canal was being dug. Has this job been finished? Will your luggage have been packed before the train's arrival? Let him be helped. अब इसमें जो है अभी अपने मैंने कुछ सेंटेंसेस पढ़े हैं, ये वैसे हैं जिनमें काम करने वाला जो था मैंने इसको निकाल दिया। काम करने वाला है तो फिर ये वाले सेंटेंस बनाए, इसकी क्या जरूरत है? जब काम करने वाले का पता है फिर पैसिव वॉइस क्यों बनाए भाई? फिर तो एक्टिव वॉइस बनाए, ये आसान है। इसकी जरूरत पड़ती है जब हम ये कहते हैं जूते खरीदे जाते हैं। अब सेंटेंस जूतों से स्टार्ट होगा तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। किताब पढ़ी जाती है, सेंटेंस किताब से शुरू होगा तो पढ़ने वाले का नहीं पता, ठीक है। बस चलाई जाती है, चलाने वाले का नहीं पता है, तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, वरना हम एक्टिव वॉइस ही बनाते हैं, ठीक है। तो भाई फिक्रे दो तरह के होते हैं, ये एक्टिव वॉइस होती है या पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में काम करने वाले का पता नहीं होता। ये बाय वाला चक्कर जो है ये इससे निकलना है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। The Taj Mahal was built at an enormous cost. अब इसमें काम करने वाले किसने बनाया ताजमहल? कोई नहीं लिखा हुआ। Maize is sown in the rainy season. You will be punished for your negligence. He was accused of theft. All the papers will have been marked. Have you been cheated? Has he been informed? He was killed fighting the Chinese aggressor. Gandhiji was born um, on 2nd October 1865. हम तो कायदा मानते हैं भाई गांधी जी, चले अच्छे बंदे अच्छे हैं, बट हमारा फाउंडर जो है वो तो कायदे आज़म है, गांधी जी तो नहीं है। एंड सॉरी टू से, okay, it is, I'm not sorry to say, I'm proud to say that Qatar is the founder of Pakistan. All right, ये देखें दी। No Chundi लिखा हुआ है। Khandi fair is held every year in Meerut. Okay, many uh, dailies are published from Delhi. Dailies यहाँ पे आपकी अखबार है भाई, जो रोजाना छपते हैं या आते हैं। He will be pleased to see you. He will be happy to see you. आगे है जी, I was surprised to see the fury of the floods. It is said that Shivaji was an incarnation of Lord Shiva. It is said, it is believed that Shivaji was an incarnation of Lord Shiva. अब मुझे इसकी इनकारनेशन की मुझे समझ हल्का हल्का आइडिया तो मिला है, लेकिन
सच पूछे मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़े तो मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। लेकिन एक मुझे जो समझ ये आ रही है कि शिवा जी में इसकी रूह जो है, लॉर्ड शिवा की रूह जो थी वो काम कर रही थी। मुझे आइडिया है, मतलब ये पक्का श्योर नहीं है कि यही बात है कि नहीं। तो सेंटेंस से मुझे ये आइडिया मिला। अच्छा, हम जो हैं, हमें कैसे पता चले, ये मैंने भी बात कर रहा था कि ऐसे सेंटेंसेस में काम करने वाला होता है और ऐसे सेंटेंसेस में काम करने वाला नहीं होता। तो कैसे पता चलता है, ठीक है, कि हमें कैसे पता। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी, आवाज़ें ऐसी होती हैं सेंटेंस के आखिर में उर्दू में, जो हमें बता देती हैं कि काम करने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें अक्सर सेंटेंसेस या उसमें जी मतलब जा या क्या की साउंड यूज हुई है, और उससे पहले अलिफ छोटी है या बड़ी है होगी। मसलन ये देखें जी में जा है और इसके पहले छोटी है आई हुई है, और ये भी जी में जा है, छोटी है, या से पहले अलिफ है, ठीक है। अ, होंगे, ये भी जा है, जा से पहले बड़ी ये है, ठीक है। तो ये सारे पैसे वाइज बनते हैं। क्या से पहले अलिफ आ गया, और ये है से पहले अलिफ आ गया, या से पहले अलिफ आ गया, तो ये वाले जो है ये पहचान होती है कि काम करने वाले का हमें नहीं पता होता है, ज्यादातर नहीं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो है पैसे वाइज होंगे, इनमें काम करने वाले का पता नहीं होगा। और आसानी से बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ। 7 अल्फाज हैं जिनके साथ अगर तो इंक थर्ड फॉर्म आ जाए तो काम करने वाले का नहीं पता होता, ठीक है। अब आवाज के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है, काम करने वाला नहीं है। और भाई इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई, काम करने वाला नहीं है। बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये कौन से अल्फाज, इज, एम, आर, वर्स, वर, बी, बिन, ये मेरे दिमाग में है, मुझे इनका पता है। ऐसी बातें मेरे से सीखने के लिए आप जो हैं एक ट्रायल क्लास ले सकते हैं, और मेरा नंबर है 0301 460 4168। ऑनलाइन ट्रायल क्लास हो सकती है। आप आके लेना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। मैं लाहौर में पंजाब सोसाइटी में ये क्लास जो है आप कंडक्ट कर सकता हूँ, फ्राइडे, सैटरडे या संडे को। आप अपना नाम जो है, आप जो है ट्रायल क्लास के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें अपना मैसेज, ठीक है। अपना रब्ता नंबर, टेलीफोन नंबर तो खैर आ ही जाएगा। अगर आप विलिंग हैं, कोई आधे घंटे की ट्रायल क्लास होगी जिसमें 2 मिनट टेंसेस पे लगेंगे, 3 मिनट ग्रामर पे लगेंगे, और अगर ये छोटी छोटी जो बातें हैं जैसे एक्टिव पैसे की, ये भी ज़्यादा देर नहीं लगती, इतनी है। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो काम करने वाला नहीं है, या ये पैसे वाइज होगा। और अगर इनके साथ इंग फॉर्म आ जाए तो भाई एक्टिव वाइज होगा, क्योंकि इनके साथ या तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इनके साथ या तो इंग फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी। इंग फॉर्म आई तो एक्टिव वाइज, थर्ड फॉर्म आई तो पैसे वाइज। बाद के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, पैसे वाइज पता चल गया है। इसकी ट्रांसलेशन जा और इससे पहले चारी छोटी है बड़ी है होगी। इज के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म, पास के साथ थर्ड फॉर्म, विल हैव, बिन के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, बिन के साथ थर्ड फॉर्म, बिन के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये सब जो है ये क्लियर है। वाज के साथ थर्ड फॉर्म, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। तो ईद, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, यही मैंने बातें बताई थी, इनके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए पैसे वाइज तो हो गए ही थर्ड फॉर्म, मुझे पहले ही पता है, ठीक है। इज, सेड, इज के साथ थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म, इज है। और बस ये भाई आगे है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई इस काम का हुक्म दिया जाता है, ठीक है, काम करो, ठीक है, या काम ना करो, या मना किया जाता है, या काम करने का कहा जाता है। और इसमें भी इसको पैसिवाइज करके दिखाया है, ठीक है। तो ठीक है, डू दिस वर्क, अगर आपके सामने एक बंदा है तो आप उसको ऑर्डर करेंगे डू दिस वर्क, काम करो, या काम होने दो, ठीक है, दोनों ही बातें होंगी। बाय निकाल दे, बाय की कोई जरूरत नहीं होती है। डू दिस वर्क, आस्क हिम टू सिट डाउन, पनिश हिम। तो हम ज्यादातर जो हम एक्टिवाइज बोलते हैं, इसलिए मैं ज्यादा फेवर करता हूँ एक्टिवाइज सेंटेंसेस। प्रैक्टिस द पोस्ट, प्लीज डोंट स्मोक, don't encourage discipline, don't encourage indiscipline, सॉरी मैं वो गलत पढ़ गया था। आगे, let this work be done, be के साथ थर्ड फॉर्म, ओके। let him be asked to sit down, let him be punished, let the post be delivered, you are requested not to smoke, indiscipline should not be encouraged। ले जी, ये हो गया, ये 26वां दिन आ गया। 26वें दिन में क्या भाई,
ये नहीं वाले फिक्रे हैं, ठीक है। Can anybody bear such an insult? Can anyone bear such an insult? Anyone, anybody, एक ही चीज है। Who can bear such an insult? Is not health more precious than wealth? Did they not enjoy at the party? Shall we never forget these good days? What is beautiful? What a beautiful scene it is. What a lovely sight it is. Oh, sorry, it is मैंने कह दिया. What a lovely scene it was. What a lovely sight it was. What a beautiful. मैं क्या हो गया? ज़बानी ज़बानी पढ़ी जा रहा हूँ. What a beautiful scene it was. What a lovely. Beautiful scene या lovely sight. दोबारा पढ़ते हैं. What a beautiful scene it was. What a lovely sight it was. अब ठीक है. और इसमें सारी पढ़ लें इस तरफ जैसे लिखे हुए हैं. Was a cold night. What a cold night it is. What a hard life was. What a hard life we live. What a hard life we lead. Please open the door. Please have a cup of milk. Please keep quiet. Amitabh is as tall as Sanjay. Very few cities in India are as big as Mumbai. Very few cities in our country are as big as Mumbai. No other man was as strong as Ali. Very few Indian saints were as popular as Vivekanand. Very few Indian saints were as popular, as famous as Vivekanand. Vivekanand. Okay. No man is immortal. Sonia is not as intelligent as Abida. There is no gain without hard work. She never neglects her daily work. She never neglects her routine work. No sooner had I reached the station than the train left. और इसके बाद आप देखें ये देखते हैं जी how cold it was. हाँ जी ये वाले. Nobody can appear such an insult. No one can appear such an insult. No one can appear such an insult. Okay? Health is more precious than wealth. And they enjoyed at the party. अच्छा ये सादे फिक्रे हैं ये इनके क्वेश्चन बनाए हैं. We'll never be able to forget these good days. ये पहले पढ़ने चाहिए थे. मेरा ख्याल था शायद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वो अभी चला आ रहा है. इस वजह से मैंने ये पहले पढ़ दी. ओके 26वां दिन. Okay, all right. It was a beautiful scene. It was a lovely sight. It is a bitterly cold night. It is a terribly cold night. We live a very hard life. We lead a very hard life. Will you please open the door? Will you please have a cup of milk? Will you please keep quiet? Sanjay is not taller than Amitabh. Mumbai is bigger than most other cities in India. Mumbai is bigger than most other cities in our country. Ali was stronger than any other man. Vivekananda was one of the most popular saints in India. Vivekananda was one of the most famous saints in India. Man is mortal. Abida is more intelligent than Sonia. Where there is hard work, there is gain.
She always pays attention to her routine work. She always pays attention to her daily work. I scarcely had scarcely had I reached the station when the train left. ट्रेन जी इसमें कुछ मिटा हुआ भी था अब ये आगे आ गया जी ये 27 डेज है इसको हमने कैसे पढ़ना है यूज करना है क्लास हाँ इसमें देर का इस्तेमाल है ज्यादातर ओके देयर आर सम students in the class or there are a few students in the class. Is there any girl in the hall? There is no boy in the playground. None of these girls was present there. Did any of you play football? Many of the boys hadn't come to school yesterday. How many mangoes are there in the basket? Hardly a botanical like him. That book that book has more pages than this book. Many a man has suffered at his hands. Neither man has come. He gets a small salary. ये सारे जुड़े हुए हैं ए लेता है भाई He gets a small salary. Isn't there any milk in the bottle? And get me some water, please. या फिर यूं कह सकते Let me have some water, please. Is there any ink in the bottle? How much milk is there in the glass? Your glass has less milk than mine. Shall I give you some more milk? Will you have some more milk? There was a lot of water in the river. Is it exactly half of that? Is it exactly half of that? Do come tomorrow. Don't forget. You must come tomorrow. Okay, both Kamala and her brother came. Both Kamala and her brother dropped in to see me. Both Kamala and her brother came to see me. I will never forgive him. Indeed, I'm happy. Of course, I'm happy. You don't study hard, do you? Of course I do. Please keep quiet. Please be quiet. Do write to your father. नहीं जी ये भी लेटर ये भी डे खत्म हो गया नाउ वी आर बिगनिंग डे 28 इसको भी इसी तरह से पढ़ेंगे Who is that? Who is he? Who is she? It's my friend. It was not the correct answer. This is your book. That's mine. This is our book. That's mine. Who is there? Sorry, मैं गलत पढ़ गया इसको. This is your book. That's mine. Who is there? It's me. Is it me you want to see? Is it me you are calling? It was the happiest day of her life. It doesn't make any difference. It doesn't matter to me. It's 4 o'clock. Will you please give me either a pen or a pencil? Both answers are correct. She is neither a teacher nor a student. None of the two prisoners, is guilty. There are a number of students in the class. Both Rajani and Meena should work hard. My shirt is white. Your shirt is white too. My cat is not black. Your cat is not black either. The scenery here is nice. The scenery here is beautiful. The scenery here is lovely. I have finished 2/3 of this work.
of this book. I have finished two-thirds of this book. The magistrate ordered his arrest. The magistrate ordered his arrest. I'll see him when I go to Mumbai. I have had my food meals. I have had my food. I have had my meals. Time is money. Did you get a monthly allowance of 100 rupees? I'm I'm 45. What can be done now? Both my hands have been injured. I have given up painting. लें जी 29वां दिन आ गया. All the books on this table are blue. Everyone in the crowd was stunned. Each of them has his own car. I bought 4 pencils at 15 paisa each. Sonia and Reena are fond of each other. Rajiv visits his mother every other week. Either of these two keys will fit the lock. Give me something to eat. Take out anything you have in your pocket. I've lost many a thing. Has someone come? Yes, somebody is waiting for you. There was communication in every house. Sorry, there was commotion in every house. There was uproar in every house. Had anybody else come? Had anyone else come? Nobody came here. No one came here. Everything in this house is at your disposal. Everything in this house is at your disposal. You can use anything in this house. Everyone in my house is ill. They were in the garden all the time. They spent all the time in the garden. We went all around the garden. They traveled all over the country. All this all this while I waited for her. Bad habits should be nipped in the bud. Mohan lives from hand to mouth. The dacoits are still at large. The murderer was caught red-handed. I got wind of this matter. His days are numbered. Building castles in the air won't help. Had He had a narrow escape in the lorry accident. He had a narrow escape in the lorry accident. We should not lose our temper over trifles. He has been He has seen many ups and downs in his life. I can work for 12 hours at a stretch. He wants to reach the top by hook or by crook. He wants to reach the top by hook or by crook. लो जी आखिरी दिन है इसमें जो प्रैक्टिस दे हैं इसने कहा सेंटेंस बनाए अपनी मर्जी के ठीक है दिस इज हिज हाउस दिस इज हर हाउस आप इस प्रैक्टिस की और एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है मैं नॉर्मली ऐसे इसी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होता सेंटेंसेस हो मैं पढ़ दूँ ठीक है और इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं आई अवॉइड देम आप भी करें इनको जो है उलझने की कोई ज़रूरत नहीं गेम है आप इंडल्ज हो सकते हैं फ़र्क टाइम में आप बनाते जाएं बट इन आखिरकार आप इसको देखेंगे कि ये बहुत बोरिंग है ठीक है ये वाले मैं नहीं पढ़ रहा आखिर में क्योंकि इसमें एक्चुअली ये सारी रिवीजन मेरे ख्याल में हो रही है तो इसको भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसके साथ ट्रांसलेशन नहीं है तो आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं ये क्वेश्चन है ये आंसर है ठीक है स्पोकन इंग्लिश में ये हेल्प करते हैं क्योंकि साथ ट्रांसलेशन नहीं है इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ और
आप चाहें तो, क्योंकि मुझे अच्छा है शायद कहीं ना कहीं कोई एक्सरसाइज वगैरह ना आ जाए इस तरह की बात है, तो मैं एक्सरसाइज टेस्ट एग्जाम्स उनको नेसेसरी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज ऑल, द मोर प्रैक्टिस यू मेक देन बेटर यू आर। तो ये जो है आज इसके 21 डे 21 से डे 30 तक का जो काम है वो हमने इसको कंप्लीट किया है। जो स्किप किया है दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। और इंग्लिश सेंटेंस रीडिंग जैसे कि ये है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो ये भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा स्टार्ट करके आप फील करेंगे कि बहुत बोरिंग है, मुझे तो ऐसे लगता है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा थोड़े सेंटेंस बनाऊंगा बहुत बोरिंग हो जाएंगे। और इससे तो भाई थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस भी बन सकते हैं। तो हमारे पास इतना रुकने का टाइम नहीं है, हमें तो पढ़ते जाना है। और जहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस बने हुए हैं, हम उनको क्यों ना पढ़ें, ये जो है जो हमें बनाने पड़ेंगे तो उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि इनकी ट्रांसलेशन भी नहीं है। अगर ये सेंटेंस दिस इज हिज हाउस, अब इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही तो वो फिर इससे ज्यादा फायदा नहीं उठा सकेगा। एनीवे तो ये जो है आप इस तरह की मैं तो रिकमेंड करूंगा अवॉइड करें, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आने की। तो ये जो है मैं आई एम आखिर में फिर जो है मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और मेरी जो इस लैंग्वेज पे मेरी महारतें जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में है। और ये इंडिपेंडेंट रिसर्च मैंने जो है की हुई है, और ये रवायती नहीं है, और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी ज़रूरी थी लेकिन हमने नहीं सीखी, सिखाई नहीं गई, सिखाती सिखाई नहीं जाती। ये रवायत हैं और मैं इनको नहीं मानता। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें सीखनी चाहिए, और जो नहीं ज़रूरी हैं हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। हमें ऐसी बातें स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता है, और वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कि ये चीज़ भी हमें पता है, ये चीज़ भी हमें पता है, ये चीज़ पता है, हमें ऐसे मेथड्स में नहीं उलझना होता है। और जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, ठीक है। और यही जो है मेरा आपको मशवरा है। अगर आपने कोई ट्रायल क्लास मेरी लेनी हो, कोई मेरा मेथड इससे डिफरेंट है, जो ये इसमें बहुत कुछ बताया गया है उससे डिफरेंट है, इसलिए मैंने बहुत सी जो है छोड़ दी थी। जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन तो मैं हर जगह पे छोड़ देता हूँ, मुझे पता होता है उनमें कुछ भी नहीं है। और आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है। तो हो सकता है आप इस दुश्वारी में हो सकते हैं। तो आप अगर ट्रायल क्लास जो है मेरे से लेना चाहें तो मेरा नंबर है 0301 460 4168। ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है। अगर आप लाहौर में हैं, बैरिया टाउन के करीब हैं, या इसमें जुबली टाउन के करीब हैं, तो आप देते हैं ये क्लास मुझे फिजिकली मिल भी सकते हैं, क्लास ले भी सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, टाइम डिसाइड कर लें, उस टाइम पे क्लास हो सकती है। हाफ एन आवर की क्लास आपके लिए, या हाफ यानी 30 मिनट्स टू, अगर जरूरत पड़ती है 60 मिनट की क्लास भी हो सकती है। तो आधे घंटे से 1 घंटे की क्लास हो सकती है। वी कैन अरेंज दैट। इंशाल्लाह यू विल लाइक दैट, आपको अच्छा लगेगा जी हैं, और आपके इल्म में इजाफा भी होगा। आपको पता चलेगा कि इंग्लिश किस कदर आसान है और इसको किस कदर मुश्किल बनाया हुआ है। और यही वो वजह है कि बहुत से कई सालों तक स्कूल में पढ़ने के बावजूद हमें इंग्लिश नहीं आती। हालांकि उर्दू में ऐसा नहीं होता है, उर्दू तो हम 2-3 साल स्कूल जाते हैं तो उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। शुरू में बच्चे, छोटे बच्चे ही उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। चलें जी, तो हम वी कम टू end this class. Thank you very much for being with me. It was a 1 hour long video and I tried to cover as much as I could. तो मैं थोड़ी से थोड़ी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। बैठ ही के हैं तो चलो 1 घंटा इस पर सर्फ हो जाए। और एनीवे आप इसके पार्ट्स भी कर सकते हैं, 10 मिनट एक दिन सुन लें, 10 मिनट अगले दिन, 10 मिनट अगले दिन। थैंक यू वेरी मच once again for being with me. Have a nice and wonderful time ahead. Goodbye.